with Vijay Bhai, there's always this customary selfie which we take. So before the show, we will take that selfie. Thank you. Actually, so I'll tell you what. ये नया फिनटेक है, एंकर के सवाल से पहले अपना आंसर चालू कर दिया. नहीं, मैं निकुंज आपको बताता हूँ, सेल्फी का जमाना आया और मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग मेरी फोटो ले रहे हैं या मैं उनके साथ ले रहा हूँ. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम आई यूज टू बी रियली जॉयस कि कोई जिसको मैं बहुत ऑनर करता हूँ वो मेरे साथ फोटो ले रहे हैं. तो मैं जो पॉइंटर देता हूँ इसलिए कि ये हीरो है. तो मैं फिर ऐसी सेल्फी लूंगा. थैंक यू. ओके, हीरो तो सामने बैठे हैं. Oh yes. Oh yes. And in fact, जब हम स्मार्टफोन जनरेशन is ending now in the world, more or less के स्मार्टफोन plateaued है. The biggest app of smartphone that changed the world is actually FaceTime. You'll say क्यों? क्योंकि FaceTime करने के लिए स्टीव जॉब्स ने फ्रंट कैमरा लगाया. नहीं तो नोकिया एज तक सारे बैक कैमरा थे. तो FaceTime ऐप के लिए फ्रंट कैमरा आया, उससे फिर लोगों ने सेल्फ फोटो खींची, उससे सारी दुनिया सेल्फी में हो गई. चाहे मोदी जी इलॉन मस्क से मिले या ट्रम्प किसी से मिले, अब सब लोग सेल्फी करते हैं. तो मेरी नजर में फेस टाइम इज द ऐप ऑफ स्मार्टफोन एज विच इम्पैक्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. Now, everyone in this room I can vouch for has used Paytm somewhere or the other. Please raise your hands those who have not used. देखिए एक भी नहीं है. That is the power of a brand called Paytm. And in India, and frankly, last 15 years, very few brands have got created which are at a global standard. And one of them is actually Paytm. Now, Vijay Bhai, Paytm has been in news. Good news, bad news. So what should we start with? The good news or the bad news? As always, a business guy will say, give me the bad news first. So bad news first, if there is. And I think now you're calling on that question. मेरा ये मानना है कि कोई भी बैड न्यूज नहीं होती जब तक कि वो आपको खत्म ना कर दे, फिनिश ना कर दे. What doesn't kills you makes you stronger philosophy tells me that there is genuinely a lesson of future resilience and future opportunity that hides behind so-called bad news. And I can say that there was a lot of lesson to learn and there was an obligation to lesson to learn. In fact, मैं अपनी तरफ से एक और बात बोलता हूँ, यदि हम वो लेसन लर्न नहीं करते जो हमारे लेसन जैसे हमने पिछले साल में लर्न किए, तो शायद हम वो जो अपनी एम्बिशन रखते हैं, बहुत बड़ी एम्बिशन रखते हैं कि $100 बिलियन कंपनी बनेंगे, इंडिया से एक ग्लोबल कंपनी बनेंगे, वो अचीव नहीं होता. सो इन अ quasi uncomfortable way, I can even also say that was a nice thing that I got a lesson which made me survive and learn. So better to learn, and better late than never, and better that it happened at this early days. So this is the first time anyone is interacting with you on this large forum after all those regulatory problems have happened. So this is technically your first big interview after the regulatory problems. So in simple terms, can we assume that all the regulatory problems which had happened, which were openly discussed on all the forums, are they over or it is still work in progress? I'm very hopeful that they are conclusively concluded, but at the same point of time, the direction and the path and the things that have to be done, that is behind us. How did you manage to waive that problem period? What changes you made at Paytm? Because you've sold some businesses, you've changed some business models, and now you are on path to profitability again. What are the changes you did? So I wrote it on Facebook, which is, I don't use Facebook much, but I wrote it because वहाँ पे बहुत कम लोग follow करते हैं मेरे को, या फिर मैं bother नहीं करता क्या reaction आते हैं. Every pain has a message to deliver. Once the message is delivered, the pain recedes. If I was ready to accept that there is something inside it, which is something that we have to correct, I have to correct, we have to, and I think owning up that was the first and biggest lesson of the time. It included that, number one, we were doing too many things. We were mixing up a few things versus many things which were not concurrent, coherence, and so on. So we pruned, cut
or made money in a way by exiting many of the businesses and sorting out that I want to go back to the focus, go back to the fundamentals and keep at it till the time period we are not just big, but a very big as a industry player and a sizable player. Obviously, in this kind of movement, we lost some of the market share. We lost some of the, let's say, customer consumer love that we could have and we were expecting to garner. But at the same point of time, I said, the earning back, the winning back will be the success of it. And the success will be that we are back with a number and market share, which is good for us to have in the long term. So more or less, I'd say the lesson learned was that the regulatory businesses are compliance first businesses. We should and we better take care of that. And second lesson was that you have to have an organization where the compliance officer is not a separate person. The business person speaks a compliance language. So I upgraded our governance, I upgraded our compliance, I made the organization understand that it is compliance first. All the businesses that were so-called not compliance requirement, like commerce, like many other things, we sort of said that, let's not mix it. Organization has one culture. Paytm has several businesses. UPI, which all of us identify with, Paytm Karo. Then there is lending, which is the heart of your profitability. Yeah. Then you are in the business of wealth management, insurance, and there was another business which was an events which you've sold to Zomato. Am I describing Paytm business model correctly? Yeah, bilkul. Okay. What would be the future growth businesses for Paytm? Which are the businesses which will grow and which are the businesses which could contract? So, very clearly, payment is our foundation. So we believe that payment standalone can make profit. And that's a big statement. I would rather say that seeing what there is an expectation based on the sort of incentive plan that we saw the government announce, that there is an MDR that is coming. So that will be a big boost to the payment, and payment inherently can become profitable, I think, if we go towards that path. So payment is critical, profitable by standalone, scale. कितने मिलियन लोग हैं हमारे पास? हमारा मानना ऐसा है कि हम 200-250 मिलियन लोगों को ये देश में सर्व कर पाएंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे. मैं मार्केट शेयर से ज्यादा वो जो अच्छी क्वालिटी के 25 करोड़ लोग हैं उनको चाहूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे. एंड आई कैन से दैट वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी कंटिन्यू टू हैव देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म बिकॉज लेट्स से इवन इफ समथिंग चर्न हैपेंड इट डिड नॉट हैपन ऑफ द गुड क्वालिटी कस्टमर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट इज बिग. Credit is, like you said, distribution of credit. We are recalibrating. We have added FLDG somewhere. We've removed the distribution somewhere and so on and so forth. Will remain one of the key driver of profit. And it stays, it continues. And what we are not focused, and after that wealth, I don't have to say, India's stock market is inviting many, many domestic investors, and this is pride of India. I'd rather say after some days, it will be very clear that after payment revolution in India, the pride of India will be the number of demat accounts and the amount of effort that happened in wealth space, so to say. Mutual fund sahi hai event, let's say. Insurance and many other things, we would primarily keep them as business as usual. We will not put a lot of effort on it. Payment, credit, wealth, that's my next 2 years plan. When you went public in the DRHP, which is applied to the SEBI, I'm breaking it for our viewers, you said that हमें पता नहीं हम पैसा कब बनाएंगे. We don't know when we would be profitable. Now you're saying that we are committed to walk on the path of profitability. So when will you declare profits? Very interesting. I remember that, and I remember going on TV also. और मेरे को बताया गया था कि देखिए आपने जो लिखा है वही वर्ड बोलेंगे क्योंकि उससे डिफरेंट तो आप वैसे ही नहीं बोल सकते और कर भी नहीं सकते, तो आपको वही लिखना चाहिए. तो ट्रू टू द अनकंफर्टेबल स्टेटमेंट रिटन, वीव हैड वन ऑफ द रीजन कि हमने पिछले 2-3 साल में प्रॉफिट बनाए नहीं. At the same point in time, I can tell you very happily that internally the team and the kind of effort in the business we've done, we are clearly committed in the next quarter to deliver profit, and we have made a public statement about it. Thank you. And I believe that the best benchmark of profit will be PAT and the free cash that the company generates. I am completely committed to deliver a PAT growing company, and that I don't see very far. Like I said, in the next quarter, we have already called out, and next year, let's see what happens. Great. When you went public on day one,
there were a lot of yes and no about the valuations. The stock came down, then it stabilized, then there was that ugly volatility when the stock actually below 400 rupees and now it has come back. How do you react to it as a promoter from wealth going to couple of billion, coming down by a few billion, आपके stock पे काफी memes बन रही थी, हाँ. कई लोग कई बातें बोल रहे थे. How did you take to that period of that crisis? So, मैं कंपनी को अपनी डॉटर की तरह समझता हूँ. मैं उतना एसोसिएटेड और लिंक्ड हूँ जितना एक पेरेंट अपनी डॉटर के लिए केयरिंग एंड लविंग होता है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो मैं ये नहीं देखता कि उससे मेरे को डिफरेंट होगा या फिर कुछ गेन मिलेगा. डॉटर को देते ही हो आप, डॉटर से कुछ लेते नहीं हो. तो आप अगर नोटिस करो तो मेरी लाइफस्टाइल कभी ना पहले और बाद में कुछ भी चेंज नहीं हुई. आई डू बिलीव दैट यू सर आपके शेयर होल्डर्स की लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी जिन्होंने 1900 में शेयर लिया था. आई टोटली एग्री एंड द बेस्ट थिंग आई कैन डू, एंड मैंने अपनी तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं कभी कंपनी से कुछ एक्स्ट्रा शेयर ये सब कुछ नहीं लूंगा जब तक कि सबके पैसे यानी कि मार्केट लिस्टिंग प्राइस पे ना आ जाए. एंड देयर मे बी मैनी रीजंस के उस टाइम पे क्या प्राइस मिला और आज के टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है. देयर कैन बी मैनी रीजन. इंटरनली वी आर कमिटेड टू डिलीवर अ, like I said, PAT or free cash growing company. And I believe that even though it could be a time-bound activity, but it is inevitably to happen. The market opportunity of India, financial services, Paytm opportunity is huge. I'm all in on Paytm and I won't let this not happen by any measure that के हम कभी क्वेश्चन करें. So वो कमिटमेंट रहेगा और मेरा मानना है कि अब हमारे को रास्ता बिजनेस मॉडल क्लियर है. एंड लाइक यू सेड इट इन द DRHP वी सेइंग वी डोंट नो व्हेन वी विल बी प्रॉफिटेबल, एंड नाउ आई एम सेइंग दैट वी आर हियर इन द नेक्स्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर आफ्टर दैट. सो हियर इट इज. It's not very far. It could have been a little bit frothy in terms of many regions in the market of opportunity guessing or opportunity or size guessing, and then market itself takes corrections. आपने देखा होगा पर्सनल लोन के अंदर, अनसिक्योर क्रेडिट के अंदर बहुत कुछ हुआ, फिर हमारी कंपनी के अंदर बहुत कुछ हुआ. तो मेरा मानना ऐसा है कि whatever has happened has made us stronger and better. Now we are for good committed and clearly seeing the path towards a large profit. So take a leap of faith on Vijay Shekhar Sharma. This time he will deliver. मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि actions speak louder than words. So instead of saying it, I'll say that we will deliver it. Fantastic, fantastic. And I just want to set the context here that very few companies essentially have managed to really go through this curve of changes, disruption, reaching customer satisfaction levels, going through the regulatory ups and downs, and then really arrive as a winner. So I'll put a very basic question for the audience here. A company is judged on a curve. Startup, then they become young, then they become mature, and then they reach at the stage of decay. Is Paytm still at a startup stage where high growth, exceptionally strong compounding, that is ahead of Paytm? Actually, if you see the base numbers, they are phenomenally small. So there is high growth inevitably. India intersection, financial services intersectional, the kind of customer we are serving, there is inevitability. I would rather say startup में bottom line की चिंता नहीं करते, equity से पैसा रेज करते रहते हैं. और mature company में जैसे होता है ना, पहले खुद कमाए फिर दुल्हन लाएं, उस तरह का हो जाता है कि आप पहला अपना पैसा खुद कमाएं फिर उसको इन्वेस्ट करें, तो वो मैच्योर कंपनी होती है. तो स्टार्टअप और मैच्योर कंपनी में ग्रोथ से एक ठीक है, वो एक सॉर्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट हो जाता है. बट मैं कहूँगा कि मैच्योर कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करती है और मैच्योर कंपनी वो होती है जो अपने पैसे जो इन्वेस्ट करने होते हैं खुद अर्न करती हैं. सो हमने जैसा आपने देखा होगा, जो we raised about $1 billion and we have more than that in the cash in the hand, is inherently a statement that we are here to invest also with the money that exists from the business, not necessarily just the equity money, so to say. And there goes opportunity also. पहले हमारे कंपनी का अपना बॉटम लाइन आएगा, फिर वो उस बॉटम लाइन को हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे. ये एक स्टार्टअप नहीं करती. ये टिपिकली स्टार्टअप करती है कि मैं एक्स्ट्रा फंड रेज करूं सो दैट द मार्केट में ग्रो करूं या इन्वेस्ट करूं. मैं कहूंगा कि हम अपनी खून पसीने की मिलेगी तो यार वो खाएंगे, वो वाला और लगता है कि हम अपनी मेहनत से बनाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट बड़ा करेंगे. Fantastic. So I'll just close with one final question, something I've been wanting to seek an answer. So I'll be slightly selfish because इसका आंसर मैं जानना चाहता हूँ. And I'll put a context here, which is that every 10 years there is a wave which comes.
When first time GPS came, it put the map industry on the back foot. Correct. Then when internet came, it started the revolution of Amazon. Correct. Then when smartphone came, Paytm was born, Uberization of the economy happened. Now AI has come. जी. What will change in the short term because of AI in India? What will change in the medium term? What will change in the long term? हाँ, ये मेरा बीइंग अ टेक्नोलॉजी पर्सन, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज ए इंडिया वी कैन यूज एआई एट ए मैस स्केल, पॉपुलेशन स्केल. एआई को थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ एज ऑफ नाउ. अभी हम लोग कमांड लाइन पे कुछ चैट बॉक्स में लिखते हैं एंड उसका कुछ आउटपुट टेक्स्ट में आ जाता है. तो ये बिल्कुल इंटरनेट जो बहुत लोग जानते होंगे 94-95 में था, उस तरह का इंटरनेट हुआ. जबकि रिवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट आया उसके 10 साल और 20 साल बाद. मतलब हम बात कर रहे थे 2005 में और 2015 में. तो एक तरीके से अगर हम अभी देखें तो एआई जो अभी है वो प्रॉमिसिंग है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के यूज केस क्लियर नहीं है कि कितने सारे और होंगे और इनॉर्मस यूज केसेस हैं. उसी तरीके से एआई के अंदर जो सबसे पहले दिख रहा है वो सारे जॉब्स जो टेक्स्ट आउटपुट की तरफ से सॉर्ट आउट हो सकता है वो खत्म हो जाएंगे या फिर लिमिटेड हो जाएंगे. मतलब उनकी जॉब की ग्रोथ रुक जाएगी एंड दे विल बी मोर एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एजेंट हु वुड बी हैंडलिंग द टेक्स्ट. नाउ दिस कुड बी द जॉब प्रोफाइल और स्किल फ्रॉम any kind of jobs that you are talking about text output wise. But the great thing will happen that AI will become the power and tool to give you more power and tool to grow better in the. So लोगों की skill enhance हो जाएगी, efficacy enhance हो जाएगी, productivity बढ़ जाएगी. The job which was, अब जैसा हम लोग सब एग्जाम्पल लेते ही हैं, if you remember, कि जब ATM आया था तब लोगों ने सोचा ATM, आई एम टॉकिंग सिटी बैंक जो पहले बार ATM था कि बैंक के ब्रांचों का क्या होगा. आपको लगता है बैंक ब्रांच कम हुए थे, ज्यादा हुए थे? ज्यादा हुए थे. इसी तरीके से जब इंटरनेट आया तो लोगों को लगा कि अब तो ऑफिसेज कम हो जाएंगे. कम हुए, ज्यादा हुए? तो प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट एनहेंसेस द जॉब प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड दिस इज अ इनक्रेडिबल प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट टूल. पीपल विल मूव फ्रॉम अ स्मॉल स्किल टू अ लार्जर स्किल. पहले आप और मैं, जैसे अभी हम लोग अपने आप को DIY ट्रेडिंग करने की बात कर लेते हैं. पहले ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक एडवाइजर, ब्रोकर, ये सारा स्ट्रक्चर चाहिए था. तो इमेंस इंडस्ट्री ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूडिंग एंड नॉट लिमिटेड टू पीपल हु आर अंडर स्किल्ड और लो स्किल्ड गोइंग टुवर्ड्स हायर स्किल. सो शॉर्ट टर्म में लगेगा कि ये एक तरीके से कुछ कहीं ये जॉब लॉस तो ना कर दे, और लॉन्ग टर्म में होगा कि वाओ हाउ आर वी लिविंग विदाउट इट. सो मेरी नज़र में, चाहे जैसा आपने बोला कि मैप के बाद GPS कंपनीज का कुछ नहीं हुआ, बट लेकिन मैप के बाद तो इतने सारे और बिजनेस बन गए ना जिसके कारण हम बेटर लाइफ जी पा रहे हैं. अब आप मैप के कारण कॉमर्स देखते हो, मैप के कारण ऊबर देखते हो, मैप के कारण आपकी जो दसियों हजारों इंडस्ट्री जो बनी उसके बाद, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. Fantastic. So before I wrap, I'm going to stand up and say something about Mr. Vijay Shekhar, which is that what is that one thing which I have over the years seen with मैं भी खड़ा हूं. Vijay Bhai, it's about you only, which has differentiated from others. It is not vision, it is not wisdom, it is not his lifestyle. I think one thing is grit. His ability to never say never. His ability to really stand, fall, get up, run. And that is a differentiating factor which I guess has made what looked like a small company a global benchmark to reckon with. The Prime Minister himself, when he went to France on his last visit, UPI use kara tha, Paytm use kara tha. Thank you very much. And when people ask him what to do, he just says one simple thing: believe in India and be gritty by nature. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very Thank much. you. Very generous. Thank you. Thank you. Well, ladies and gentlemen, a huge round of applause for Vijay Shekhar Sharma, now taking a selfie. I wonder who the celebrity is.